So it is saying that NaCl gives a white precipitate with AgNO3. And if you do the same reaction with CCl4, then it does not give any reaction. Right, Harsha? Yes, sir. Okay, fine. Now, first of all, now let us look, that means there is some difference between sodium chloride and CCl4, correct? Yes, sir. Okay. Now, what is the difference? How can we identify the difference? The difference can only be identified between sodium and carbon, because here also we have chlorine and here also we have chlorine, right? But chlorine is bonded to sodium in the first case and it is bonded to carbon in the second case. So we have to look what is the difference between sodium and carbon. Correct, Harsha? Yes, sir. Okay. So tell me, what is the difference between sodium and carbon? One of the basic difference that you can tell is sodium is what? Metal. Sodium is a metal. And carbon? Non-metal. Carbon is a Non-metal. non-metal. Right. Now, here we have sodium, which is a metal, and chlorine, it is a non-metal. This is in group 1. This is in group 17. This is having low ionization enthalpy. This is having high electron gain enthalpy. Right? So all of these characteristics is saying that sodium chloride will be what? It will be ionic. And this CCl4 is going to be covalent. Correct? Yes, sir. Okay. So that is the main difference, that NaCl is ionic and CCl4 is covalent. Okay. That is why in NaCl we will have positive and negative cation anion, and it is going to show a double displacement reaction. Maybe you have seen this in class 10. This Na, which is cation, this is anion. This is cation, and NO3 negative, which is anion. A sodium will attach with NO3. Here, NaNO3. Plus it will give AgCl. And this AgCl is actually the white precipitate, white PPT. Okay. But since it is covalent, this double displacement type, it does not have cation and anion. So the cation and anion cannot be mutually exchanged between CCl4 and AgNO3. So the answer is going to be, because NaCl is ionic, but CCl4 is covalent. Got it? Yes, sir. Okay. Now, Sarah, I think you also had a doubt, no? Yes, sir. That statement explanation. Yeah. So it is saying explain the formation of H2 molecule. Formation of H2 molecule. Now, when we look at formation of H2 molecule, so we have to look at hydrogen. You have one hydrogen atom. Its electronic configuration is 1s1. And here we have another hydrogen. Its electronic configuration is also 1s1. This hydrogen atom's electronic configuration can be shown like this. And this electronic configuration can also be shown like this. Okay. Now, obviously, I'm showing this them to be oppositely signed. The reason is that this hydrogen 1s will have, oops, sorry, not a, this will be spherical, right? And similarly, this other hydrogen will also have a s orbital. Now, one of the s orbital, I'm changing its color, and this whole hydrogen atom, I'm changing its color to be blue. Now, both these they are having one electron each. This is also having one electron. This is also having one electron. Now, what's going to happen? Both of these are going to combine with each other.
like this, and then these are going, this is the bond formation of H2 molecule. Got it, Yasuna? Please tell me. Yes, sir. So what is happening? H2 is formed by overlapping of two half-filled, by overlapping of two half-filled 1s orbital. Understood this? Yes or no? Yes, sir. I don't know where the other students are. Chali. Now we are going to discuss a concept that is known as hybridization. Okay, let me bring my earphone. Okay. Now, with the information that we have about the valence bond theory, let us try to understand the formation of with using the valence bond theory only, we understood the formation of hydrogen H2 molecule, right? And it can be explained that many other molecules such as Cl2, F2, all of these homodinuclears, they can be understood. Let us suppose we have after hydrogen, let us suppose we are talking about formation of O2 molecule, or rather, rather than O2, let's take N2, okay, because N2 is going to give you the complete picture, N2 molecule. Now, formation of N2 molecule is going to be something like this. What we will do, also one more thing, this is according to VBT, because we have to also learn about molecular orbital theory. In that also we are going to see the formation of N2. Now, for this N2, what we will do, first of all, tell me, we'll write nitrogen. In N2, we have two nitrogen atoms. So nitrogen, its electronic configuration 1s2, 2s2, and 2p3. Correct, guys? Yes or no? Please tell me. Yes. Yes. And then we will write another nitrogen atom with the same electronic configuration like this. Correct? Now, from here, we will only look at the valence shell. Okay, so valence shell is 2s2 and 2p3. 2s2 and 2p3 here. So 2s2 will be something like this. And 2s2, 2p3, something like this. Now, obviously, I will keep the s orbital here. Now, this s, as you can see, it is completely, this s orbital is having paired electron. This is having unpaired electron 1, 2, 3, and I'm going to give them opposite. Okay. Now, in valence bond theory, we have seen that atomic orbital they should be half. Okay, that means they should be having single electron in each orbital, half filled single orbitals. Now, as you can see, this 2p, this is px, this is py, and this is pz, right? This will also be, let us suppose, pz, this will be py, and this will be px. If I am going to make these particular orbitals, they will look something like this.
Okay. Now I'm changing the color of few. Suppose this is blue. Also blue. And let's suppose one of this is pink. So this will also be pink. And let us suppose that this is green. This will also be green. Okay. So let us suppose that this blue one is the Px, the green one is the Pz, and the pink one is Py. So we'll have similar orbitals. All of these are half filled, as you can see, right? All of these are half filled. So we will have similarly, this particular nitrogen atom will also have all of these three orbitals, Px, Py, and Pz. All of you can identify Py, Px, and Pz. Pz is green. Pz is green. And Py you can take as blue, or rather pink, I would say. And Py is also pink. And Px is here what? Px is blue. And Px is here also blue. Okay. Now these orbitals will come into contact. And as you can see, the Pz and Pz is making what? Sigma bond. Yes or no? Can you guys see that? Pz and Pz is making sigma bond, right? And in this sigma bond, in this overlapping, we'll have the two orbitals like this. Sorry, two electrons in this one orbital. Okay, so one px from the, one electron from the pz of one nitrogen atom and one electron from the pz of the other nitrogen atom. Got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Overlapping, you got this, huh? And similarly, you can see that we are having a lateral overlap between this nitrogen, huh? And also we are having this between these nitrogen orbitals and also between this pink and pink. Now, both of these, the blue and the pink one, these are what? These are the pi bonds. And that is why you see in nitrogen, we have 3 bonds. Nitrogen has 3 bonds. It is triply bonded. This nitrogen atom, it has one single bond and it has one sigma bond and the other 2 are pi bonds. So this green one is sigma. And this blue one is pi. And this pink one is also pi. Okay. Now, when the same approach was taken for, H2O molecule, please see here. Let us suppose H formation of H2O. So from Lewis dot structure, we have oxygen and single bond with hydrogen and single bond with hydrogen. Now, when we have this type of structure, so we first of all look at the oxygen atom. Oxygen atom is having, we want to understand the bonding here. Okay, we want to understand the complete bonding. 1s2, 2s2, and 2p4. Hydrogen atom is 1s1. Other hydrogen atom is 1s2. Okay. Now, here if you look at oxygen atom, we are going to take the valence shell. So this is 2s, and here we have 2p. Here we have 2 electrons, and in p we have 1, 2, 3, and the 4th electron will be here. And in 1s, I'm going to keep this oppositely sign.
This also will be having downspin. So they said, okay, fine, maybe oxygen atom, here we are having Py, this is Pz. So let us put the Z orbital like this. Yes, ये बनेगा तो ठीक है. और फिर इसी को okay, so this blue one is Pz and this pink one is Py. ठीक है. अच्छा, अब इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो यानी मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है इस तरह से. Both of these are having one electron each. This is having one electron. This is also having one electron. अब उसके बाद हाइड्रोजन का जो 1s1 है, हाइड्रोजन 1s1 will be spherical in shape. It will be something like this, right? And similarly, this one is also spherical in shape. So both of them will be having oppositely sign like this and like this. Now both of them will come into contact and they will have, and they are going to have a bond like this, and this is going to have a bond something like this. Okay, so they said, okay, fine, that's okay. That means oxygen is in the middle and we have a hydrogen atom here and we have another hydrogen atom here. All of you agree with me? Yes or no? Please tell me. Till here, there's no problem. Yes, sir. Yes, sir. Okay, no problem till here. Now, this particular bond, it is made by the Py, and this particular bond is made, this is made by Py orbital, Py and S orbital, S plus Py. This is made by S plus Pz. Okay, it is made by S plus Pz. So Py and Pz orbital are forming the bond. And what is the angle between Py and Pz? What is the angle between Y and Z axis? 90 degree. Right. So they, okay, so from pure, now just imagine, okay, just imagine the power of theory. We have not even seen H2O molecule, but we are predicting that the two hydrogen atoms, they will be 90 degree apart from each other in the H2O molecule. Can you understand what level of knowledge it is? Without even, I mean, that's the power of theory, that without even going to lab once, we just assumed a few things, right? We just assumed a few things, and what we are predicting the bond angle of water molecule, right? Now, I want you guys to just Google the bond angle of H2O. Tell me from the Google. Now, this is our source. This is the original data, okay? This is the original data. Tell me, what are you getting, guys? 104.50. 104.5 degrees, right? Correct? And this is the actual. And this is our expectation. So I would say that, I mean, there is 14.5 degree of error. It's kind of a huge error. I mean, the error that you can understand, I mean, you can, if you can have an error, it will be of less than 5%. Okay, if you are having an error of more than 5%, you must have heard this or learned this in unit dimension and measurement. Then obviously you are doing something wrong. Something in the process is wrong. So obviously we try to apply the valence bond theory into water molecule to understand the bonding, but unfortunately we got it quite off, right? So there is something missing in our theory. So we don't need to go to lab still. We don't need to look at the H2O, like the water molecule. We don't even need to drink water molecule in order to understand what is the bond angle. Okay. तो बिना कुछ खाए पिए ऐसे बैठ के हम लोग बॉन्ड एंगल पता कर लेंगे अब. Now what they said that they compared many of the findings from they compared many of the expectations of valence bond theory, and
Then they also looked at the data, that is the original data, and they compared these things. What was off, what was off, what was off. So the theory of mixing of atomic orbital was given. The theory of mixing of atomic orbital was given. So that theory is known as hybridization. So please write the topic. Hybridization. So we are going to learn another theory. Something is off with the VBT. VBT can easily explain, I mean, it very correctly explain the homodinuclear. If you remember from class 10th, 9th, no, 9th. Homodinuclear, N2, H2, Cl2. It can explain perfectly fine about those things. But as we move on to tri-molecules and triatomic molecules, the molecules which are having 3 atoms, in that it is failing. So we start with another theory, hybridization. So whenever I say hybridization, you should have in your head mixing of atomic orbital of one atom. Atomic orbital of one atom. Now, hybridization is kind of a chutney theory, okay? You completely assume that it is kind of chutney. So we will take different atomic orbitals as we take dhania, as we take nimbu, as we take lasan, mircha, as we take imli, and we mix it up to make a chutney. So the same thing is happening in hybridization. You will make a chutney. Please write first point in hybridization. Intermixing of atomic orbitals of slightly different energies. So as to redistribute. So as to redistribute their energies. So as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals which have equivalent energy size and shape. Okay, so I'm writing some points so that you can write when you are asked in the examination what is hybridization. Right, next point. Now what is happening? We are intermixing atomic orbitals and we are forming, important word to note down here is new set of orbitals. We are forming completely new set of orbitals after the intermixing. So we will call this new set of orbitals hybrid orbitals. The new orbitals formed are called hybrid orbitals. Okay. So for example, so intermixing will take place. अच्छा, कितनी चीज मिक्स हो सकते हैं? एक चीज मिक्स हो सकता? Can you mix one thing? Tell me, guys. If you want to make a mix, no, you need at least 2 things, right? एक चीज कभी mix नहीं होगा, right? Correct, guys? अच्छा, Harsha, can you please turn your mic on? Yes, Harsha. Yes, sir. You use a space bar or do you use the turning the mic on? What do you use when you speak? Can you please avoid that? Because you know what happens. Let me show you what happens. 180
Hello. So when you touch space bar, then the voice comes for a fraction of sign and it is just noise. I just got alerted. Oh my God, someone said something, I could not hear it. So whenever you say yes, sir, no, sir, even then, please turn your mic on properly and then answer. Okay, this is for everyone. Many people do it, and right now just Harsha did. That's why I told her. Now we have to mix two things, right? We have to mix two things. So what are the two orbitals that we can mix? We can mix s orbital and p orbital. We can mix s orbital and p orbital. Achha, how many atomic orbitals are we mixing? Tell me, guys. How many atomic orbitals are we mixing? 1, 2, 3, 4. How many atomic orbitals? 2. We are mixing 2, na? We are mixing s and we are mixing 1p, one of the p orbitals. Now, if you mix one s and one p orbital, you will get sp hybridized, and you will get one more sp hybridized. You are mixing 2 atomic orbitals and you are getting 2 hybrid orbitals. All of you got this? Yes or no? Please tell me. ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा? You will get 2 sp hybrid orbitals. Got it? इसको हम sp and sp कर देते हैं. ठीक है, 2 मिला. प्लस नहीं करना चाहते because plus seems that it is also mixing. So sp and sp, you are going to get 2 sp hybrid orbitals. Now, if you are going to mix one s orbital, one p orbital, and another p orbital, please remember there are 3 p orbitals. Now, in this case, you will get sp2 and, or rather, I would say, comma, another sp2, and you will get one more sp2. So you are getting 3 sp2 hybrid orbitals. Got this? Yes or no? Please tell me. Can you understand the naming? Harsha, Yasir, Martin, and Abdullah. All of you, can you understand the naming? Yes, Right. So, Harsha, there's a lot of noise today from your side. Hybrid orbitals. Busy हैं क्या आपने? घर पे नहीं है? yes, at home, but there's disturbance. So sp, and here we are having 2 p orbitals, and we can also do s 1p plus 1 more p and plus 1 more p. Now here you are getting how many atomic orbitals are mixing? 4. So you will get 4 hybrid orbitals. You will get sp3, another sp3, another sp3, and you will get one more sp3. Understood this? Yes or no? Please tell me. Now you can mix s orbital plus p orbital plus p orbital and plus d orbital. So here you are mixing how many? 1, 2, 3, 4, 5. So we'll get 5 sp3 d, Sir, rather 4. Yeah, tell me. सर बोल के चुप हो गए. अरे इसलिए तो बोलते हैं माइक ऑन करके रखिए. हम भी ना आपका इंतजार करते हैं ऐसे. कौन बोल गया यार? सर बोल के चुप हो जाते हैं. उसके बाद देखिए s plus p and one more d. What you are going to get? You are going to get 6 sp3 d2 orbitals. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. बोलो भाई. Yes, sir. Tara, you said something. Tara.
Is everyone done writing? सबने लिख लिया? Yes, Harsha, Sara, all of you tell me. Yes, sir. कुछ बोल रही थी क्या आप सारा बीच में? ऐसा लगा सर बोला आपने. Yes, because I couldn't hear you. कुछ ना प्रॉब्लम हो गई है सारा आपके माइक में ऐसा, और एक तो आप लोग ऑन करके क्या बोलते हैं, फट से माइक ऑफ कर लेते हैं, आवाज ही नहीं आती, पूरी बात कंप्लीट नहीं होती, माइक ऑफ कर लेते हैं आप. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HOS hybrid orbital. Please write here. Number 1. Number of hybrid orbitals formed is equal to number of atomic orbital taking part in hybridization. Next, the hybrid orbital form will be equivalent in energy, shape, and size. Right, next, the hybrid orbital formed, the hybrid orbital form are more effective in bond formation than pure atomic orbitals. Fourth is, the fourth point is very important. Okay, please ध्यान से सुनिएगा. Hybrid orbitals are arranged in such a way that the repulsion between them is minimum and distance is maximum. ठीक है, so this is very important point जो आप लोग याद रखेंगे थोड़ा. Hybrid orbitals are arranged in such a way that the repulsion between them is minimum and distance is maximum. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Right, next. Conditions for hybridization. Number 1. First is only valence shell. Only valence shell orbitals. Only valence shell orbitals take part in hybridization.
Second is difference in energy of atomic orbital. Difference in energy of atomic orbital taking part in hybridization. Taking part in hybridization should be small. Third point, promotion of electron is not a necessary condition Fourth point, half-filled orbital is not a necessary condition. So what is promotion of electron? Promotion of electron. See, for example, अच्छा आप इसको अभी लिख सकते हैं. We are going to understand in this part only, promotion of electron. Okay, write this now. Once we get to a particular level, कार्बन तक आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि that what is promotion of electron. Okay. चलिए मार्क्स लिख लीजिए जो आपको ध्यान रखने हैं. Number 1 is only the atomic orbital of central atom take part in hybridization. Next is only sigma bond is formed by hybrid orbital. Next, one of the lobes get enlarged after hybridization. All of you understood this? Yes or no, please tell me.
इस क्लास को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा आप, ठीक है, आज ही बैठ जाइएगा, even if it take half an hour, sit with the notes and try to revise each and everything. And once now we are going to start applying these things. ठीक है, hybridization हो गया, we're going to apply these things, so we will understand it very, बहुत अच्छे से आप लोग इसको पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या एक्चुअली हो रहा है, ठीक है. There is a lot of theory in the starting, and then each of those part will be applied slowly, slowly, and slowly. Okay. So you try to identify each and every section and try to match with the theory. Okay, fine. We did this here. That is the application. We did this here. That is the application. Now, since the atomic orbital of central atom is taking part, we are going to understand a very important concept, that is steric number of central atom. Now, it's not very tough. It's very easy. Steric number of central atom. Steric number of central atom. Now, a very easy formula is steric number is equal to number of sigma bond plus number of lone pairs. So we are talking about the central atom only. Steric number is calculated, is determined only for what? Only for the central atom. Okay, steric number is only determined for central atom. All of you write this down. ठीक है, अब सुनिए, कहीं कहीं पे ना, फॉर एग्जांपल अगर हम आप एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू H2, ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे लोग को ना ऐसे डायरेक्टली आइडिया नहीं, समझ में नहीं आता है कि क्या होगा स्टेरिक नंबर, है ना. लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉन्डेड सब कुछ देखना पड़ेगा क्या. तो इसके लिए एक सस्ता तरीका ये है, क्या करें आप, सुनिए, स्टेरिक नंबर का थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, बट एप्लीकेशन उसका आसान हो जाएगा. प्लीज सी हियर. What you can write here is equal to 1/2 valence. Just a second, guys. See, V plus M. Okay. Then you have to minus C and you have to add E. क्या मतलब है इस फॉर्मूला का? काफी आसान है समझना. सुनिए, V is the number of valence electron. Valence electron, अच्छा, valence electron किसका? Tell me guys, valence electron किसका होगा? valence electron किसका? सेंटर. हाँ, वेरी गुड. ठीक है. नाउ M को ऐसे तो बोला जाता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीशीज. क्या बोला जाता है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीशीज. लेकिन हमें क्या याद रखना, वो हम आपको बता देते हैं. नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीशीज में याद कर लीजिए क्या, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीशीज. मोनोवैलेंट मतलब the elements whose valency is 1. The elements whose valency is how much? Whose valency is 1. यानी कि सेंट्रल एटम पे कौन कौन से ऐसे मोनोवैलेंट स्पीशीज अटैच्ड हैं. तो मोनोवैलेंट स्पीशीज क्या हो सकते हैं? या तो हाइड्रोजन होंगे, और इट विल बी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन.
इसके अलावा कोई भी मोनोवैलेंट नहीं होता। इफ यू जस्ट मूव फ्लोरीन से पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट। ओके, नाउ व्हाट इज सी? सी इज द कैटायनिक चार्ज। अगर आपके पास कैटायन है, चार्ज ऑफ कैटायन, और वहीं अगर आपके पास अनायन है तो दिस विल बी चार्ज ऑन अनायन। All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, अब देखिए, अब यहां से थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, लेकिन इट्स गोइंग टू बी फाइन। फॉर एग्जांपल, लेट अस सी H2O। ठीक है, H2O का स्टेरिक नंबर निकालना, क्या निकालना है? स्टेरिक नंबर। सो स्टेरिक नंबर विल बी इक्वल टू half of number of valence electron of oxygen is equal to how much? Tell me guys. Number of valence electron of oxygen, कितना होता है valence electron? How much is it's 6, right? Plus number of monovalent species, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीशीज क्या हो जाएगा बताइए? 2। क्या हो गया? 6 plus 2 it is equal to 8। now 8 divided by 2 which will be equal to how much? 4। तो H2O का स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 4। all of you got this? Yes or no? Please tell me. आपको समझ में आया? हाँ या ना? Yes, sir. all of you wrote this formula, स्टेरिक नंबर? Yes, sir. ठीक है, अब चलिए, आई एम गोइंग टू गिव यू सम and you are going to write the steric number for them. Okay, please write CH4, this is second, third लिखिएगा NH3, fourth लिखिएगा SF6, fourth fifth लिखिएगा BCl3, right, sixth लिखिएगा BeCl2, सेवेंथ क्या लिखिएगा? चलिए इतना ही कीजिए। स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है व्हाट्सएप पे भेजिएगा सब कोई।
Okay, Harsha has sent me. Yes, Harsha, CH4 is correct, NH3 is correct, SF6 is correct, BCl3 is also correct, BeCl2 is also correct. Very good. अच्छा, एक और निकाल लीजिए तो जरा 7th हर्षा, since you're done. CO2. What are this? Sarah, यासिर अब्दुल्ला और मार्टिन, ये लोग तो बस ऐसे ही आ रहे हैं। जो आपको ये हरकत कर रहे हैं ना यासिर और अब्दुल्ला, वो तो क्यों गाइस कि कभी आना कभी नहीं आना, जब मर्जी तब क्लास में आ जाना, बहुत बाद में बहुत आपको अफसोस होगा। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स गेट अपडेटेड ना कि आप कब क्लास में आ रहे हैं, कितने दिन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, फिर आप हाफ ईयरली आएंगे, आप परेशान रहिएगा। अभी तो समर वेकेशन है, आप लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। भाई आदमी 10th के बाद खुद सीरियस हो जाए, हम तो नहीं बोलते बच्चों को उतना। तो बच्चा क्लास ना आए रेगुलरली, टीचर कुछ पूछे तो जवाब नहीं दे, तो उस बच्चे बाद में क्या ही बोले। सारा आपका आंसर नहीं है। सारा कैन यू सेंड मी व्हाटएवर यू हैव डन? आगे भी बढ़ना है ना फिर। सारा कुछ आप अगर कहीं पे अटके हो तो फिर वो हम आपको बताते हैं। एक्सप्लेन? नहीं। नो व्हाट, वन सेकंड। सेंड मी व्हाट यू हैव डन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता होना चाहिए आपको। यू हैव नॉट डन एनीथिंग सारा? कीप योर माइक ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल। I just did. Sir, I just did the first one, CH4. Yeah, tell me. Send me now whatever you have done. Please send me. हाँ सही, तो फिर आगे कीजिए ना। नाइट्रोजन, आपको नहीं पता नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ? देखिए दिक्कत कहाँ आ रही है। ओके सारा, ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट नो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। इज दैट राइट? या क्या दिक्कत है? Yes, sir. क्यों नहीं आ रहा है आपको बताइए। कीप योर माइक ऑन। माइक क्यों ऑफ कर देते हैं यार? एक तो माइक ऑन रखो, हम माइक ऑफ कर देंगे। तो दिमाग बिल्कुल आप ना खराब कर देते हैं इस मामले में।
अब भी नहीं? हाँ ठीक, सुनिए, क्यों नहीं पता आपको? अच्छा, वन थिंग सारा, आर यू यूजिंग एन ईयरफोन? No. Airport. Sorry, earpods? Yeah. Can you please unplug them, because there is a lot of vibrating noise, something इस तरह से हो रहा है, उसको प्लीज अनप्लग कर दें, डिस्कनेक्ट कर दीजिए उसको। हेलो सारा, आर यू स्पीकिंग? बिकॉज आपकी आवाज नहीं आ रही है। मे बी आपने बस उसको रिमूव कर दिया है, लेकिन वो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ शायद आपका अभी तक। So first CO2 eject 2. हाँ, that is correct, very good. You got 2 ना हर्षा? Yes, sir. ठीक है। हाँ, सारा, हम ये Yes, कहना sir. चाह रहे हैं, हाँ जी अब सही है आपके पास। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, आपने पीरियोडिक टेबल याद किया? Yeah. याद किया सारा? Yes, sir. बताइए, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आता है फिर? Like मैंने वैसे याद किया, like जैसे आपने वो ट्रिक बताई थी ना, मैंने अभी तक वो याद नहीं किया कौन से ग्रुप में, कौन से पहले कौन से सेकंड है। आपने क्या याद किया, बताइए जरा। वही जो आपने हमें ट्रिक बताई थी लर्न करने की। बताइए ना, क्या याद किया, क्या याद किया बताइए। अ, सबसे पहले क्या आता है? अ, हे हे लीना, लीना की रब से फरियाद। ओके, उसके बाद ये ग्रुप 1 हो गया है ना सारा? यस सर। है ना? ग्रुप 1, ग्रुप 2 बताइए। शुरू का बताइए। शुरू का हम क्यों बताए भाई, आपको तो याद है। शुरू का बताइए। नहीं याद है, मगर उसके बाद नहीं पता कौन सा आता है। नहीं ना, ऐसे ये फिर याद नहीं होना सारा। सारा इसका याद करने का मतलब, आपको इंडिविजुअली अपने अकेले में बैठे तो आप सारा पीरियोडिक टेबल गा दें, है ना? ठीक है, तो पहली Yes, बात, sir. क्या आपको पीरियोडिक टेबल याद है? Yeah. नहीं याद है ना, कहाँ याद है? ठीक है, पहले आप ये समझिए कि आपको पीरियोडिक टेबल नहीं याद। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा इस चीज को, आप उसके ऊपर काम भी नहीं कीजिएगा, है ना? आप हमेशा हमेशा मेरे इंतजाम से सर पहले का बता दीजिए, ऐसे तो नहीं चलेगा ना सारा। Yes, sir. समझ में आई? ठीक है, चलिए, वो ऐसी कोई बात नहीं नहीं, मतलब थोड़ी ना आदमी बचपन में जब पैदा होता है तभी उसको पीरियोडिक टेबल याद रहता है। धीरे धीरे चीजें आती है, तो उन पे फिर से थोड़ा सा वर्क कर लीजिएगा। 1 दिन 2 दिन लगातार आप पढ़ लीजिए। 1 2 दिन नहीं बोलेंगे हम, अच्छे से याद करने के लिए 7 दिन आप लगातार उसको पढ़िए, ठीक है ना? प्रैक्टिस इट ऑन ईच ऑफ द 7 days, नो डोंट इवन मिस 1 day, ठीक है? और हमेशा ट्राई कीजिए दैट यू आर कवरिंग इट अप एंड देन यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर इट। एंड इफ यू डोंट रिमेंबर द कंप्लीट थिंग, then you will look at once, read it once and then try once again. और ये चीज कभी नहीं करना है कि स्टार्टिंग वाला देख लें, है ना? स्टार्टिंग वाला अगर आप देखिएगा तो बार बार आप स्टार्टिंग वाला देखिए। समझ में आ रही है? आई विल टेल यू हाउ विल यू कंफर्म कि आपको पीरियोडिक टेबल याद है। आप इस तरह से बोलने सके, ग्रुप 1 लिनक रब कसपर या हे लीना की रब से फरियाद। ग्रुप 2 बेमक्का सरबरा, बेमक्का सरबरा बेटा मांगे काज स्कूटर बाप राजी। ग्रुप 13 वी वेंट टू बैगन आलू गाजर इन थैला। ग्रुप 14 कैसी गीत सुनाओ प्रभु। ग्रुप 15 नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। ग्रुप 16 उससे टीपो। ग्रुप 17 क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अच्छा, ये तो मैंने ऐसे याद हो गया। सॉरी, फिर कल बाहर आई आंटी। एंड ग्रुप 18 इज हे न्याज अरे करो जेरोक्स रंगीन। So if you are able to say it this way, तब आप बोल टेबल याद। Is that clear सारा? Yes, sir. तो जब आप इस तरह से कहेंगे तो आपने सुना होगा ग्रुप 15 नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। Now since nitrogen it is in group 15, the number of valence electron will be the unit place. Unit place पे कौन है? Fine, ठीक है? तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? स्टेरिक नंबर will be equal to half the number of valence electron is 5 plus the number of monovalent यानी हाइड्रोजन कितना है 3 is equal to 8/2 is equal to 4। अगले अगर में आएंगे आप SF6 में। गॉट इट सारा? जल्दी हो Yes, गया क्या? sir. थोड़ा समझ में आ गया ना? Yes, sir.
SF6 में जब आप आइएगा तो SF6 में सल्फर का जो सल्फर इज उससे टीपो ग्रुप 16 ऑक्सीजन के नीचे है ना, हाफ 6 प्लस 6 6 प्लस 6 कितना 12 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 6, ठीक है। BCl3 बैगन आलू गाजर इंथेरा ग्रुप 13 स्टेज नंबर कितना हो जाएगा हाफ 3 प्लस 3 this will be equal to 6 by 2 which will be equal to 3. BeCl2 बेटा मांगे कार स्कूटर कौन से ग्रुप में आ गया ग्रुप 2 आ गया, so 2 plus 2 is equal to half into 2 plus 2 4 by 2 which will be equal to 2. CO2 में अब ध्यान दीजिएगा जरा, CO2 में the number of valence electron कैसी गीत सुनाओ प्रभु ग्रुप 15 कैसी गीत सुनाओ प्रभु ग्रुप 15 ग्रुप sorry not group 15 my bad group 14. Now group 14 will have 4 valence electron and this oxygen is not monovalent, it is divalent. Its valency is 2, so 4 plus 0, you don't have to add anything, so 4 by 2 will be equal to 2. All of you got this? Yes or no? Please tell me. हाँ जी बताएं, कोई दिक्कत परेशानी उलझन तो किसी को बताइए, कोई परेशानी नहीं ना? हाँ जी सारा यासिर मार्टिन अब्दुल्ला गाइस समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सारा। अगर आपको प्रॉब्लम आई किसमें हाइब्रिडाइजेशन में या फिर अगला टॉपिक में देखने वाले वेस्पर थ्योरी, ठीक है वेस्पर VSEPR थ्योरी, इसमें इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम दैट विल नॉट बी ड्यू टू द हाइब्रिडाइजेशन एंड वेस्पर थ्योरी, इट विल बी ड्यू टू valence electron and the problem in valence electron will be due to not remembering the periodic table. Got this? Yes or no? Please tell me. Yes. Okay, so it's very important. Now see what happens, हाइब्रिडाइजेशन समझ में नहीं आ रहा, हाइब्रिडाइजेशन जाके देखा तो बच्चे का प्रॉब्लम है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता नहीं है कहां से आएगा, हाइब्रिडाइजेशन में कुछ ऐसी चीज नहीं, हमको समझ नहीं आता, बच्चे बोलते थे सर हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ, हम जाके देखते थे तो पता चलता था वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता ही नहीं, ये पता नहीं सल्फर है या ये सल्फर है या फिर क्या है सोडियम है ना, ये सारी बेसिक्स दिक्कत है, पीरियोडिक टेबल आना ही आना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ So we after can this use formula in the exam, right? Or do we have to do by number of sigma bond plus sigma bond? दूसरी चीज थोड़ी सी हम आपको बता देते हैं हर्षा, ये एग्जाम में पूछा ही नहीं जाने वाला है, स्टेरिक नंबर का कंसेप्ट एनसीईआरटी में है ही नहीं, ठीक है Okay. ठीक है, ये स्टेरिक नंबर हम इस वजह से पढ़ा रहे हैं बिकॉज स्टेरिक नंबर विल ईज थिंग्स अप। आई डोंट नो लाइक व्हाई मतलब एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीजों को अलग अलग करके रखा है, थोड़ा सा मिला के पढ़ाते हैं, ठीक है, और इसमें एक फ्लुएंसी बनी रहेगी। एक तो हमने हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया, अब उसके बाद एक थ्योरी है जो कि है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इसके बारे में कंप्लीट नंबर ऑफ पोस्टुलेट्स हैं और ये कुछ भारी चीज नहीं, ठीक है सारा एंड हर्षद सिंस यू गाइस आर ओनली आंसरिंग हियर, ये हम तीनों मिलके भी ऐसे सोच सकते हैं इस थ्योरी के बारे में, बहुत हार्ड चीज किसी ने नहीं सोची है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करता है वो लिखना हमारे लिए जरूरी है, यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन ऑफ shapes of molecules, ठीक है ना, इतना आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद what we are going to do, we are going to deduce this theory from our mind only, we are going to deduce this from our mind only. We know something about bonding, so we know something about atoms first of all, so we have atoms like this is nucleus, first shell, second shell, right? So and third shell, let us make third shell also. Now if we have three shells, and in this three cell the first shell is having 2 electrons, the second shell is having 1 2 3 4 5 6 7 and 8 electrons, okay, and the last shell is having, let us suppose 3 or 4 electrons, 1 2 3 4 electrons. Now it is obvious that when it is getting bonded with another molecule, another atom, when it is bonded with another atom, obviously the valence shell electron
will come into contact because यही बाहर है. All the bonding will be done by these electrons only. Yes or no? Please tell me. Correct है? Yes, sir. Ion. Okay. So in an atom, there are two types of electrons. We have core electrons, जो अंदर के होते हैं, and then we have the valence electron. Now, obviously, since the valence electron are the outermost electron, they are only going to interact with any other atom that comes into contact. That comes near the atom, the valence electron are going to interact with them. And if there is any bonding taking place, that will be taking place only due to what? Only due to the valence electron. Understood this? कोई भारी बात तो नहीं है ना? This is logical, yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. इसके लिए किसी किताब की तो जरूरत नहीं है. Is that right? We don't need any book for this, right? They don't have to teach you this in order to understand or even make sense, or even what should I say? I can even say that in order to get this theory, you just need a brain. Okay, है ना? कि बाहर के इलेक्ट्रॉन्स ही काम आएंगे, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से काम आ सकते हैं? ठीक है. So this is the first postulate of valential electron pair repulsion theory. ठीक है. सबसे पहला ये क्या है? This is the first point or the first postulate of the valential electron pair repulsion theory. अच्छा, अब अगली चीज क्या है? अगली चीज और भी ज्यादा लॉजिक. अब आप ये बताइए, इफ यू आर अज्यूमिंग, अगर हमसे आपसे पूछे, इफ यू आर अज्यूमिंग द एटम, व्हाट शेप विल यू अज्यूम? एटम का कैसा शेप हो सकता है? सॉरी, जोर से बोलिए जरा. माइक ऑन करके स्पेस बार. सर्कल. ठीक है. कुछ हद तक आपने, हर्षा, यू अग्री विद दिस? यस और नो? Yes, sir. बट थोड़ा सा हम लोग बहुत स्क्रीन पे बात कर रहे हैं, 2D हो गया है ना? तो रियलिटी में तो कोई भी चीज सर्कुलर होती नहीं है ना, बिकॉज द कंप्लीट अवर रियलिटी जो हम परसीव करते हैं दैट इज 3D, है ना? सो इवन इफ यू सी अ कॉइन, तो कॉइन भी 2D नहीं होता, उसमें थोड़ा वो भी सर्कुलर नहीं होता है ना. दैट इज ऑल्सो हैविंग सम हाइट. इवन दैट हाइट इज 1 मिलीमीटर, दैट हाइट इज प्रेजेंट. अच्छा, तो हम इसी तरह बात करें, अगर सर्कल का 3D मॉडल लें तो क्या हो जाएगा? Sphere. स्फेयर हो जाएगा. सारा अग्री करेंगे इस बात से? Yes, sir. ठीक है. तो अब हम लोग, अब कुछ भारी चीज तो नहीं होगी ना, फिर नया बड़ा थ्योरी तो नहीं हो गया, है ना? लॉजिकल आंसर. आप 11th क्लास के बच्चे, अब 11th क्लास के बच्चे भी नहीं है ना, आप तो 10th क्लास के बच्चे हैं, या आपने अभी तक सिर्फ 10th तक की पढ़ाई की, तो आप तो 10th क्लास के हुए ना. ठीक है. आपका एटीट्यूड 11th वाला होना चाहिए, जरूर बात है, बट नॉलेज के एतबार से यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, नहीं तक पढ़ाई की आपने. नाउ यू कैन इजीली से कि स्फेरिकल होगा. अच्छा, उसके बाद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, दे विल बी लाइक दिस. तो अब क्योंकि ये एटम्स में पेयर में रहते हैं, तो इनको हमने क्या बोला कि ये भी पेयर में रहेंगे, दे विल बी ऑलवेज पेयर्ड. ठीक है. तो 2 इलेक्ट्रॉन साथ रहेंगे ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर साथ रहेंगे ऐसे, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन साथ रहेंगे. ठीक है. एक चीज तो हमने ये कहा आपसे, that is why it is valential electron pair repulsion theory. Electron pair repulsion theory. अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? इन एन एटम इफ यू हैव इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा? टेल मी गाइस, क्या होगा इन दोनों के बीच में जब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज रहे? क्या होगा हर्षा? जोर से. रिपल्शन होगा, है ना? तो यही आप देखेंगे. तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. ठीक है. अच्छा, अगर इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो दूसरी, अब अगली चीज ये है that these electron pairs they will position themselves such that repulsion क्या हो जाए? minimum, because repulsion, we have seen that repulsion is what? Repulsion is not favorable for stability. Repulsion unfavorable होता है, attraction is favorable. So the electron pair will position themselves such that the repulsion is minimum and distance between them is maximum. सही है? हाँ यार, Yes, sir. कोई दिक्कत? ठीक है. And they will arrange themselves around the sphere, because atom कैसा होगा? Atom will be spherical, so they will arrange themselves in a spherical manner, है ना? कि वो sphere ले ले, and in the sphere they are having maximum distance.
तो थोड़ा सा कभी कभी समझना इस चीज को मुश्किल होगा, लेकिन उसके लिए हम लोग दूसरा एक मॉडल का हेल्प लेंगे। आई मीन नॉट मॉडल इन द सेंस वो मॉडल पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन हम एक आइडिया देंगे आपको जिससे आपको समझ में आएगा कि 3D में कैसे अज्यूम करें, बिकॉज ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वी आर हैविंग, द टूल्स व्हिच वी हैव हियर राइट नाउ, दे आर 2D, है ना, बट हमको 3D का कोई टूल चाहिए होगा। ठीक है, तो एक इतनी चीज हम लोगों ने समझ लिया कि वैलेंस electron are going to take part in bond formation. These electrons will be repelling each other. That is why they will be arranging themselves in such a manner that the repulsion is minimum, distance is maximum, and they will be arranging themselves around a sphere. They will be arranging around a sphere. कितने 4 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है, कितने पॉइंट पढ़ लिए, 4 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए, and all of these are in VSEPR theory. एक जो लास्ट पॉइंट हम आपको बोलने जा रहे हैं, now this is an assumption जो आप मेरे हिसाब से मान लीजिए, 4 के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया, रटी हुई चीज नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल चीजें हैं। 4th पॉइंट जो हम बताना चाह रहे हैं बस आपको वो ये है कि मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज, जो मल्टीपल बॉन्ड होंगे ना, मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। ये आप मेरे तरफ से बस मान लीजिए इस बात, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की जो बात है वो काफी लेट में आएगी, तब जाके समझ में आएगा, अभी लेकिन इतना मान लेते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड ही ट्रीट करेंगे। इज दैट क्लियर? यस और नो, प्लीज टेल मी। और थोड़ा सा हम आपको आइडिया बता सकते हैं वो इस वजह से, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर बॉन्डेड, उसी से तो मॉलिक्यूल बनता है। इफ आई एम हैविंग हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहा है, इट इज हियर एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज हियर, so we want to understand the placement of the electrons taking part in bond formation, placement of electron taking part in bond formation, placement of electron taking part in bond formation. Now remember the structure of ethyne molecule. Now here we are having 1 2 3 4 5 6, we are having 6 electron, meaning we are having 3 pairs. लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड भी होता तब भी तो यही शेप होता, देन ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन्स वुड बी हियर ओनली ना। तो अगर एक बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड अगर आ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट बदल नहीं रहा है। कैन यू सी दैट? यस और नो, प्लीज टेल मी। यस सर। है ना? तो इफ वी आर हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स और वी आर हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, देन द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट चेंजिंग। बट हाँ, वहीं अगर कार्बन के पास अगर इफ इट इज हैविंग अ डबल बॉन्ड कार्बन एटम, देन इट इज हैविंग 2 हाइड्रोजन्स। अब यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड बने हैं, these single bonds are having different position of the electron. That is a single bond को अलग अलग ट्रीट किया, बट मल्टीपल बॉन्ड को कैसा ट्रीट किया? सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट किया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चीज जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको लिखना है, the order of repulsion. Repulsion will be there in the electron pairs. What you are going to do, you are going to leave at least a half page for VSEPR theory. You are going to write it down from the NCERT textbook, okay, and then you will write order of repulsion. इसको समझ लेते जरा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। order of repulsion. So when you see the Lewis dot structure, in that we understood that there are 2 types of bonds. There are 2 types of electron. We have bonded pair and we have lone pair. हाँ या ना? सही बात है, बोलो भाई। यस सर। Bonded pair and lone pair electrons. So bonded pair electrons, they are between 2 nuclei. ना कार्बन का एक न्यूक्लियस होगा और इस कार्बन का, I mean these electrons bonded pair, they are under the influence of 2 nuclei. इस कार्बन के भी न्यूक्लियाई के अंदर और इस कार्बन के भी न्यूक्लियाई के अंदर है। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? करेक्ट है गाइस? यस सर। और दूसरा आपके पास है नाइट्रोजन, मान लीजिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। हियर आल्सो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट दीज आर ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय, दीज आर ओनली कंट्रोल्ड बाय 1 एटम। करेक्ट है? हाँ या ना? बताएं, बोलो। ठीक है, नाउ टेल मी व्हिच विल बी मोर रिस्ट्रिक्टेड, या फिर ये छोड़ दिया, रिस्ट्रिक्टेड छोड़ दिया, कौन ज्यादा आवारा होगा? जिसको एक आदमी कंट्रोल कर रहा है वो ज्यादा आवारा होगा, जिसको 2-2 आदमी कंट्रोल कर रहे हैं वो ज्यादा आवारा होगा?
कौन ज्यादा आवारा बन सकता है ये बताएगा। थोड़ा सा गलत सवाल हमने पोस्ट करते हैं, आंसर गलत आ सकता था, इस वजह से हमने आंसर चेंज करते हैं सवाल को। कौन ज्यादा आवारा बन सकता है? ज्यादा आवारा बनने की चांसेस किसके हैं? आवारा समझ में आता है आपको? सारा है, हर्षा। लाइक बदतमीज। बदतमीज, जी हाँ बदतमीज। कौन ज्यादा बदतमीज निकलेगा बताइए? जिसको एक तो दो दो आदमी उसकी रखवाली कर रहे हैं, है ना, देखभाल कर रहे हैं, वो ज्यादा बदतमीज नहीं। एक नाइट्रोजन आदमी वाला है। एक आदमी वाला ज्यादा बदतमीज निकलेगा, है ना। उसी तरह से रिपल्शन ज्यादा कौन करेगा? एक आदमी। यानी कि अगर मान लीजिए इस तरह के दो दो मिल गए, लोन पेयर और एक दूसरा लोन पेयर मिल गया, ये दोनों मिलकर तो बहुत बदतमीजी करेंगे, है ना। तो इन दोनों के बीच में द रिपल्शन विल बी मैक्सिमम। आफ्टर दैट लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। उसके बाद जो सबसे कम बदतमीज होंगे वो होंगे बॉन्ड पेयर वाले। गॉट दिस? यस और नो? प्लीज टेल मी। यस सर। Yes, sir. And this line, this is not bond, okay. I am talking about repulsion between lone pair or lone pair. Dash नहीं है, hyphen नहीं। Got it? This dash is a hyphen, not a bond. Because bonding चल रहा है, बिल्कुल सारी चीजें जहां dash लगा बच्चे bond ही समझने लगते हैं। All of you understood? सारा and हर्षा समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब सुन, चलते हैं सबसे पहले स्टेरिक नंबर। अच्छा, एक और चीज हम आपको बताते ही चलते हैं ना। स्टेरिक नंबर जब भी बात आएगी तो स्टेरिक नंबर 2 से बात आएगी। किससे बात आएगी? स्टेरिक नंबर 2 से। क्यों सर 1 में ऐसा किया है? तो ध्यान दीजिए जरा। हाइड्रोजन एंड लेट अस सपोज यू हैव हाइड्रोजन एंड अनदर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज हाइड्रोजन आर हैविंग ओनली व्हाट? स्टेरिक नंबर 1, बिकॉज उनके पास बस एक ही क्या है? देयर इज ओनली वन बॉन्ड दैट दे आर हैविंग। एंड if you are having only one bond, then you don't have any other way, any other option to make the structure other than this. Linear ही होना है। If you are having two atoms, दो एटम के बीच में बॉन्ड कैसा होगा? लीनियर ही होगा, मतलब एक ऐसा सिंगल लाइन। अब भले ही आप इसको ऐसे रख लें, लेकिन ये तो बस देखने का नजरिया अलग है ना, चीज तो वही है, स्ट्रेट लाइन। So when you are having only two atoms and between two atoms there is only one bond, यानी कि स्टेरिक नंबर जब 1 है तो वहां पे थ्योरी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है आपके पास, वही स्ट्रक्चर बनेगा। गॉट इट गाइस? नो हर्षा एंड सारा? यस Yes, सर। sir. ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास है BeCl2। क्या है आपके पास? BeCl2। अब इस BeCl2 में तो ऑप्शंस है ना। BeCl2 में देखिए, Be रख दिया आपने, एक ऑप्शन आपके पास है कि आपने Cl ऐसे रख दिया, एक ऑप्शन आपके पास है कि आपने Cl को थोड़ा सा टेढ़ा रख दिया। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर। एक ऑप्शन है आपके पास बी और सीएल को आपने ऐसे 90 डिग्री में रख दिया, है ना। एक और ऑप्शन आपके पास बी और सीएल के बीच 90 डिग्री से कम आपने रखा। सो एज सून एज यू मूव टू ट्राइएटॉमिक, द कॉन्फ़िगरेशंस आर इनफिनिट। कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा है आपके पास। कैन ऑल ऑफ यू सी दैट? यस, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? स्टेरिक नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, स्टेरिक नंबर 2। Now, in this steric number 2, we will first take the case of number of sigma bond, यानी कि हैश का मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्मा। चलिए हम हैश हटाते हैं, सिग्मा लिख देते हैं सीधा। सिग्मा इज इक्वल टू 2 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 0 ना। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना हो जाएगा आपके पास? सिग्मा प्लस लोन पेयर हो जाएगा आपके पास कितना? इट विल बी इक्वल टू 2। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 2। तो स्टेरिक नंबर 2 ये आपके पास क्या है? एक केस है स्टेरिक नंबर 2 का। तो यहाँ पे देखिए, so here we are having sigma is equal to 2 and lone pair is equal to 0. हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसमें? हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें, जितना स्टेरिक नंबर ना उसी तरह से आप s और p को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। स्टेरिक नंबर 2 तो इसमें आएगा एक s और एक p, ठीक। तो आपको इससे क्या मिलेगा? sp मिलेगा, और एक दूसरा वाला भी क्या मिलेगा? sp मिलेगा। You will get two hybrid orbitals which are sp. Got this? Yes or no? Please tell me. यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं। हमने ले लिया s ऑर्बिटल इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। You have taken the s orbital like this and we also took the p orbital like this. थोड़ा सा गलती हो गया, p ऑर्बिटल को कुछ इस तरह से ले लेते हैं, कॉपी करके उसको पलट देते हैं। थोड़ा सा गलत पलटा गया, रोटेट हॉरिजॉन्टली, या
ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये दोनों क्या होंगे, मिक्स होंगे, और आपको मिलेगा ये एक, समझ लीजिए ठीक है, दिस इज वन। आप समझ रहे हैं ना, अगर एस आपके पास जब जुड़ेगा, एस एक लोब में जुड़ेगा तो बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है, तो वन ऑफ द लोब्स गेट एनलार्ज्ड। गॉट दिस, यस और नो, प्लीज टेल मी, हाँ या ना बताएं, इतना समझ में आया Yes, आपको? sir. Yes, sir. ठीक है, Yeah. both of these are what shapes of sp hybrid orbital. अच्छा, can you see that this is like a balloon? हाँ या ना बताएं, Yes, sir. बैलून है। अच्छा, दो बैलून को ज्वाइन कर दीजिए, कैसा शेप आएगा बताएं जरा, दो बैलून को ज्वाइन कर दें अगर, तो दो बैलून का अगर बांध दे एक साथ, कैसा शेप आ जाएगा? Heart. सॉरी, जोर से बोले। Heart. हार्ट आ जाए? दो बैलून को जोड़ के हार्ट कहां से आएगा? सोचिए, बैलून आपने कभी नहीं बांधा है? Have you guys ever tied balloons or no? Flower. Sorry, Harsha, what? So something like a flower. आप बाहर की आवाज नहीं आ रही है ज्यादा हर्षा आपके, तो इससे आप थोड़ा जोर से बोल लें। The flower shape. फ्लावर शेप, थोड़ा सा गूगल करें और देखें जरा आप लोग, टू बैलून्स टाइड टुगेदर, कीजिए जरा, टू बैलून्स टाइड टुगेदर। Sir, it is like the like लाइक So like the Image pure आया। petal. yeah, लाइक व्हाट? the orbital. लाइक द ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल की तरह Yes. Yeah. है ना, ऐसा कुछ है ना, यानी कि इन दोनों को अगर हम बांधेंगे तो हमें कुछ ऐसा शेप मिल जाएगा, हाँ या ना? सही है, Yes, sir. ठीक है। सो नाउ प्लीज रिमेंबर, आप लोग, हम लोगों ने ये भी देखा था कि व्हेन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, वो कैसे अरेंज करेंगे एक दूसरे को, तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बैलून अरेंज करता है ना। तो हम लोगों ने क्या लिखा था, हम लोगों ने लिखा था इसको इस तरह से कि are arranged in such a way that the repulsion between them is minimum and distance is maximum. तो इन रियलिटी ऑल्सो, मतलब समझिए ना, बैलून को भी आप अगर टाई कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना, और वो ऐसी जगह आ जाएंगे जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी कहाँ पे मिली उनको सबसे ज्यादा? जब वो इस तरह से आ गए ना, इन्हीं को हम कॉपी करके, तो ये अरेंज कैसे करेंगे अपने आप को, कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं हॉरिजॉन्टली। सही है, हाँ या ना बताएं? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब इसमें एंगल कितना बन रहा है आप बताइए, व्हाट इज द एंगल? क्या एंगल? 360. अरे भाई, आधा बना, 180, 180. 180, हाँ 180 डिग्री ना, ठीक है, 180 एंगल है। और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे अभी हम मान लेते हैं ये बी एटम, सॉरी ये ए एटम है, और ए एटम का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, जहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बना रहे हैं बी से। तो ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन दिख गया आपको, स्ट्रक्चर कैसा है इसका, स्ट्रेट लाइन। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, लीनियर होगी, कैसी होगी, लीनियर। ठीक है, कितना लिख लिया आप लोगों ने क्या? No, sir. लिख लीजिए जरा। So can you explain electronic geometry again? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ना कैसे आएगा, देखिए ये आपने ये ए एटम को ले लिया,
ए एटम से आपने एक लाइन बनाया, ठीक है, जो कि आपको बी एटम पे टच करा, तो उसके बाद एक लाइन बनाया जो बी एटम को टच कर रहा है। अब इसको देखें तो बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट? द ज्योमेट्री Yes. हियर व्हाट वी हैव इज अ स्ट्रेट लाइन, वही इसीलिए इसको लीनियर कहा गया, लाइन की तरह, बिल्कुल लीनियर। Got this? Write this down, let me know once you're done. डन सर। डन, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से और सुनिएगा। ये यहाँ पे एक एटम है ऐसा, ठीक है ना, और इसके पास कोई लोन पेयर वन पेयर नहीं है ना, तो ये एटम जो होगा इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 बॉन्ड बना रहा है तो वैलेंसी विल बी इक्वल टू 2, है ना, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी लोन पेयर, है ना, लोन पेयर तो नहीं दिख रहा ना आप लोगों को, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 0 होंगे, क्योंकि जो सॉरी 0 बोल रहा है, माय बैड। अच्छा, ये सारी चीजें हम लिख देते हैं। वैलेंसी कितना होगा? 2, बिकॉज इट इज हैविंग 2 बॉन्ड्स, और लोन पेयर कितना है यहाँ पे? इट इज 0, देयरफॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अरे यार क्या गलती कर रहे हैं, माय बैड गाइस, थोड़ा सा भूल जाइए, है ना, ऐसा समझिए वो मैन इन ब्लैक वाला ऐसे लाइट लगा दिया, अब तो थोड़ा सा भूल जाइए, गलती छोटी छोटी याद रह जाती है। वैलेंसी 2 है, लोन पेयर 0 है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू हाउ मच? वैलेंसी प्लस लोन पेयर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप नंबर क्या होगा बताइए? ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है हाँ या ना? सही है? अरे बोलो भाई, है ना? तो ए कौन सा होगा? ग्रुप 2 का होगा। और बी जो होगा आपके पास, बी के पास देखिए, तो बी के पास क्या है? बी क्या हमको नहीं पता, सी बी तो हमने ऐसे ही ले लिया, वी ओनली टॉक अबाउट सेंट्रल एटम इन वेस्पर थ्योरी, सेंट्रल एटम के बारे में बात करते हैं, तो बी के लिए सिर्फ हमको वैलेंसी चाहिए, तो बी इट इज मेकिंग 1 बॉन्ड, सो इट्स वैलेंसी विल बी इक्वल टू 1। अब 1 वैलेंसी वाले कौन कौन हो सकते हैं? हाइड्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ग्रुप 2 में क्या आ सकता है? नाउ प्लीज रिमेंबर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम एटम ही है जो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। बेमक्का सरबरा में बेरिलियम इज द ओनली वन व्हिच मेक्स कोवेलेंट बॉन्ड, एंड उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है बाकी के ग्रुप से डिफरेंट होती है, और इट इज डिफरेंट बिकॉज बेरिलियम मेक्स प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड। अब देखिए आप लोग, कितना अच्छा एग्जांपल सब आ जाएगा ना, देख इतना यहाँ तक समझ में आया सबको कि ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं आयन। ये ग्रुप 2 में ही आपको देखना पड़ेगा बेरिलियम, बाकी सारी चीजों में सारी चीजें आप ले सकते हैं, ठीक है ना। बेरिलियम देख लिया आपने, इधर के क्या हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब एग्जांपल लिखना कितना आसान है इसके लिए, क्या क्या हो सकता है भाई? BeH2 हो सकता, BeF2 हो सकता, BeCl2 हो सकता, है ना। एग्जांपल काफी, अरे बोलो भाई हाँ या ना? यस सर। ठीक है, याद करने की जरूरत है या समझने की जरूरत है, ये बताइए आप। हाँ जी, सारा हर्षा टेलमी, याद करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है ना? यस सर। ठीक है, समझेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी चीजें। आप अगर देखिएगा एग्जाम्पल में तो आपको मिल जाएगा BeCl2 का, है ना। NCERT बुक सामने है किसी के अभी पास में? बिल्कुल, हर्षा या सारा, एनीवन इज हैविंग NCERT? नहीं है अभी साथ में, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप देखिएगा एग्जाम्पल से आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे कि एग्जाम्पल याद ही ना करें, एग्जाम्पल आप लोग खुद बना लें, इतना क्लैरिटी होना चाहिए। तो अब हम लोग एक बार फॉर्मेशन ऑफ BeF2 देख लेते हैं। प्लीज राइट फॉर्मेशन ऑफ beryllium fluoride. So whenever we are writing formation, we are going to first of all write the electronic configuration of central atom. So electronic configuration of central atom is going to be, थोड़ा सा देर लग जा रहा है आज, सब्र कर लीजिएगा, 1s2 2s2 and 2p0, है ना। 2s2 तक ही तो होगा, बेरिलियम इज 4, एटॉमिक नंबर 4 होता है, लेकिन ये ध्यान रहे बिकॉज वी आर इन द सेकंड शेल, the 2p subshell will be present but it will be having 0 electrons,
इज दैट क्लियर सारा एंड हर्षा? यस और नो, प्लीज टेल मी। यस सर। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं। नाउ ग्राउंड स्टेट, वी राइट व्हाट? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब अगर वैलेंस शेल आप लेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2s है विच इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 2p विच इज हैविंग 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर फॉर बेरिलियम? बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाने हैं। यस और नो, प्लीज टेल मी। यस सर। तो अब इसमें से क्या होता है, सिंस इट इज फॉर्मिंग बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन इज सुटेबल फॉर स्टेबिलिटी, इट इज अ एनर्जी रिलीजिंग एक्टिविटी। तो ये थोड़ा सा एनर्जी देके अपने एक इलेक्ट्रॉन को बोलता है, अरे भाई तुम इधर चल जा, तुम पी में चला जा, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए वी नीड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। व्हाट डू वी नीड? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। मेरा एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, तो हाफ हाफ फिल्ड चाहिए ना, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ। दिस इज नोन एज प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई हर्षा आपको? व्हाट इज प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? Yes, sir. So what is ठीक है, ES? excited state. GS is ground state, ES is excited state. And now these two orbitals which are half filled, they are going to mix together, क्योंकि इन्हीं को बॉन्ड बनाने हैं, है ना, S और P। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल अब क्या बन जाएगा? एक S और एक P, दो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे। Both of them will be having similar energy and both of these will be having 1 electron each. ठीक है, 1 electron each. अब उसके बाद आएगा फ्लोरीन। ठीक है, क्या आएगा? फ्लोरीन। Now, if you look at the electronic configuration of fluorine, it is fluorine का atomic number कितना होता है? 9. It is 1s2. Please don't write this electronic configuration of fluorine. Okay, 1s2, 2s2, 2p. Tell me guys, 2p how much? 2p कितना? 5. अच्छा, now 2s2 will be like this with 2 electrons, and 2p5, 1, 2, 3. Right? So 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron, and 5 electron. Now, if I look at the F subshell, then only this particular orbital, it is having single electron. It is having single electron, and this particular electron will be taking part in bond formation. अब फ्लोरीन का हमको सिर्फ क्या चाहिए? ये रेड वाला चाहिए ना, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो they are not going to take part in bond formation, because for the formation of bond we need only singly occupied, है ना, we need half filled orbitals, singly occupied orbitals. So we have 2 fluorine and each fluorine will come with its own orbital like this. So we have here fluorine and it is having its 2p1, but 2p5 का एक orbital यहाँ पे. So let me get it down and down, and both of these are forming bond. बात समझ में आ गई? हाँ या ना बताएं? कोई दिक्कत परेशानी उलझन किसी को? नहीं ना? तो ये था फॉर्मेशन ऑफ BEF को। अब शेप देखते हैं कैसा होगा। Now, obviously, the beryllium atom, it is going to bond with the hybrid orbital, and this hybrid orbital of what? These are sp hybridized orbital. Okay, so this sp hybridized orbital, you have seen that it is going to look something like this. So how did we get 2 orbitals in fluorine? क्योंकि 2 फ्लोरीन है ना, तो एक एक Okay. फ्लोरीन आया है, मतलब वो हमने यहाँ पे फ्लोरीन नहीं लिखा। ठीक है, 2 फ्लोरीन है ना, तो एक एक फ्लोरीन से एक एक ऑर्बिटल आया है। रोटेट व्हाट हॉरिजॉन्टल, या so ये बेरिलियम के क्या होगा? These are berylliums sp hybridized orbitals. Okay, sp hybridized orbitals, ये बेरिलियम के हो गए। और अब उसके बाद आएगा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के होंगे p ऑर्बिटल्स, राइट? अच्छा, इसी को ले आए हैं। ठीक है, तो दीज आर दी फ्लोरीन्स, ये फ्लोरीन है आपका। ठीक है, फ्लोरीन का एक p ऑर्बिटल हो गया और उसके बाद दूसरा p ऑर्बिटल भी इसी तरह से। ठीक है, नाउ दिस इज द बॉन्ड। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक। एंड यहाँ पे बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन
और फ्लोरीन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन का दूसरा इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा होगा दैट इट इज लाइक दिस, बेरिलियम और 2 फ्लोरीन बिल्कुल इस तरह से हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल जो है बॉन्ड एंगल, ये है 180 डिग्री, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। एंड द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी आपके पास यहाँ पे क्या, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होती है ना उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है भाई, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, टेल मी गाइस व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, सारा एंड हर्षा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होता है बोलो। क्या बोला हमने, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, क्या होता है, बोल ही नहीं रहे आप लोग। सारा और हर्षा क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है बोलिए तो, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का क्या मतलब हर्ष सारा। हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं सवाल, दिस इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ओके। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेल्स वेयर आर द इलेक्ट्रॉन्स, वेयर आर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑब्वियसली बेरिलियम के इधर इलेक्ट्रॉन है और इधर इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज लीनियर। इलेक्ट्रॉन्स की आपको समझ में आएगा। और उसके बाद एक होता है शेप, शेप का मतलब क्या होता है, शेप जब भी पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए आपको अगला कि सराउंडिंग एटम्स कहाँ था, क्या पूछना है आपने, you have to ask yourself where are the surrounding atoms, where are the surrounding atoms, so surrounding atom यहाँ, तो यही क्या हो गया, this is also linear। आप बोलिएगा फर्क क्या है, हम बोलेंगे फर्क अगले क्लास में आएगा, ठीक है। we'll see the difference in the next class कि दोनों में फर्क क्या है सर, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और शेप में हम बताते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को हम हिंट दे देते हैं क्या फर्क है। इफ आई टॉक अबाउट NH3, तो नाइट्रोजन का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर आपने देखा होगा इस तरह से, हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर। ना इफ यू आस्क अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, आपके पास जवाब होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बिकॉज बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे भी है इलेक्ट्रॉन बिकॉज लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन होता है। सो देयर आर on the 4 sides we are having electron, but when we are going to talk about shape, then we are only going to look at the surrounding atoms, and the surrounding atoms are only surrounding 3 sides. Sara and Harsha got the difference between electronic geometry and the shape, yes or no, tell me? Yes, sir. ठीक है, चलिए। सो आज की क्लास को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा जरा, है ना। एंड फिर नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू लुक एट मेनी मॉलिक्यूल्स और फिर सारा स्टैटिक नंबर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। एंड वन मोर, एक चीज थोड़ा ध्यान रखिए।